Now, today the chemical bonding and the molecular structure, right? Today the topic will be the chemical bonding and the molecular structure. Chemical bonding and the molecular structure. You see, chemical bonding and the molecular structure. See here, you know about the chemical reaction, right? What do you mean by the chemical reaction? So, in a chemical reaction, old bond breaks and the new bonds getting formed. That is known as the chemical reaction. So, see here, if I am talking about the chemical reaction means old bonds break to form new bonds. Got it? That is known as the chemical reaction. Now see, you have two types of bond. One is the strong bond and second one is the weak bond. Got it? What do you mean by the strong bond? What are the strong bond? Anyone of you? What is a strong bond? What is a strong bond? Generally, ionic bond, covalent bond are basically considered as a strong bond. Got it? So, if I consider the chemical bond on the basis of bond energy, है ना, तुम्हारे जो chemical bonds है, जो bonds है, can be considered into two types. One is your strong bond, and other is your weak forces. So, what do you mean by the strong bond? So, see here, what do you mean by the strong bond here, and here the weak forces. So, see here, in case of a strong bond, the energy between the bond is greater than 50 kilojoule per mole. Energy between the bond is greater than 50 kilojoule per mole, right? Whereas in case of weak forces, it is basically less than 50 kilojoule per mole. In the weak force, it is less than 50 kilojoule per mole. So you can say here that examples are ionic bond, covalent bond, These all falls under category of the strong bond. Whereas in the weak forces, you see the van der Waals forces, hydrogen bonding, all comes under the category of weak forces. Got it? So strong bond means you need at least 50 kilojoule per mole to break the bond. Got it? Whereas weak forces are basically energy required to break the interaction is basically less than 50 kilojoule per mole. Now see here. See, every reactions happen because of the stability one, right? Because the products are getting stable. Now how to explain the stability? See here, how to explain the stability one? See here. Reasons for the bond formation. Reason for the bond formation. See here. What is the reason for the bond formation? Then see here. First one, you see, if you have the hydrogen and the hydrogen, got it? When they are very infinite distance apart, this is the potential energy, and this one is known as
internuclear distance. This is known as your internuclear distance. Internuclear distance d1. Got it? इसको ऐसा लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d. Got it? Now see what happens here, that when they are very infinite distance apart, the potential energy is basically is equals to 0. Once they come closer to each other, the graph look like this one. Got it? And see, this has got the minimum potential energy. So this is the most stable state of the molecule. This is the most stable state of a molecule. This is the most stable state of a molecule. Got it? And this is known as the kya? Bond length. This is known as your bond length. Got it? Because so reason for the bond formation is the kya? Stability 1. See, initial the potential energy is around 0, 1, right? Right now the potential energy become negative, means that the system has become more stable. That's why bonds are getting formed. Because of the more stability in the products, the bonds are getting formed. That's why hydrogen and hydrogen will form kya? HH1. Got it? It will form the H2 molecule. That will form your H2 molecule. अब देखो, first one you see, decrease in the potential energy. So decrease in the potential energy. Decrease in the potential energy. Got it? Now see here. अब देखो, second one is your octet theory. You know about the octet theory? What is the octet theory? Any one of you? What is octet theory? In the outermost they want to achieve kya? 8 electrons. For example, see here, if I am taking the example of, let's suppose Cl and the Cl, right? Got it? So see, Cl has got 7 electrons. So 1 electron is found in the bonding, 2 here, 2 each and C. So see, how many electrons are there? 8 electrons. This is also got kya? 8 electrons. So it has the kya? Complete octet one. It has got the complete octet one. So reason for the bond formation is the decrease in the potential energy or octet theory one, or the octet theory one. Now see here, CCl4 वो देखो, CCl, Cl and the Cl1, right? So see here, again this octet is complete, right? Around carbon, around chlorine, and if you look at the around the carbon, see here, octet is also kya? Completed one. So this is obeying the kya? Octet theory one. This is obeying the octet theory. Got it? लिखो.
Done? Does BF3 follows octet theory? BF3 molecule. Will BF3 follows the octet theory? BF3. Your name is Shad, right? Shad ना? क्या नाम था आपका? नाम क्या था? Shad. Anas. Yes, Anas, you tell. Whose name is Saad then? That one. That guy, right? White वाला. जो भी है. Yes, you tell then. Anas, you tell. Yeah, BF3 will follow the octet theory. Don't know? देखो. No. Why it is not obeying the octet one? There is a limitation. How? It has got the 6 electrons, right? See here. So the limitations of the octet theory also see. Limitations one, you are right. See the limitations. If you look at the BF3, right? See, F and the F1, right? Got it? Now, what is the outer configuration of bromine? Bromine, not boron. What is the atomic number of boron? 5 1. So how many electrons are present in the valence shell? 3 1, right? So 3 electrons are present in the valence shell. So I can write here that 1 2 and the 3 1, right? Got it? So 3 electrons are present in the valence shell 1. Now see here, fluorine has got how many electrons in the valence shell? How many electrons are present in the valence shell of fluorine? You tell. What is your name? Your name? Yeah. What? Tanisha. Pratiksha, you tell. How many electrons are present in the valence shell of fluorine? How many valence electrons are present in the fluorine? 6 1. How many electrons? 2. How many valence electrons are present in the fluorine one? 6 1. 7 ना? पहले पढ़ाई नहीं की क्या? Haven't studied in class 11 and 12? Stream हो एकदम. See here. 7 electrons are there, right? Got it? 7 electrons. So see here. Around the fluorine, the octet is complete. Around the fluorine, the octet is complete. But around the boron, octet is incomplete one. So see here, if you look at the boron one, if you look at the around boron, how many electrons are there? 6 electrons are there, right? So boron has got the incomplete octet. Incomplete octet. Got it? Understood? Write down, it has got the incomplete octet. Now you tell, does PCl5 obeys the octet theory? It is how many electrons? Around phosphorus 8. Now my question is, does it follow the octet theory or not? Does PCl5 follows the octet theory? No. How many electrons does phosphorus have in this case? कितने हैं? 10 electrons are there. See, 5 bonds are there, right? So obviously it will have how much? 10 electrons. Then see here, see
फॉस्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बताओ पहले. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज फॉस्फोरस है? हाउ मेनी? कितना है? 5. तो देखो, so 5 electrons, 1 2 3 4 and the 5 one. Got it? Now you know that chlorine has got the 7 electrons, right? 1 2 3 4 6. देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Chlorine has got the complete octet one. Chlorine has got the complete octet, but if you look at the phosphorus one, you see for the phosphorus it has how many electrons then? It will have total 10 electrons. So phosphorus has around 10 electrons, right? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? This is not obeying. However, just PCl5 also exists, right? So it is not following the octet theory one. So there are several limitations of the octet theory. Got it? There are several limitations for the octet theory. Clear है? अब देखो हम लोग बात करते हैं. See here. Done? Fine? और एक देखो. Does IF7 will obey the octet theory? IF7. Does IF7 will follow the octet theory? IF7. See how many bonds are there around iodine? It is 7 bonds, right? So 7 into 2 14 हो जाएगा. Clear है कि नहीं? So obviously this will not obey the octet theory one. Got it? Does not obey the octet theory. And और देखो एक होता है तुम्हारा odd electron species also not obey the odd electron species also not obey the octet theory. For example, if you take the NO2 radical, right? Clear है कि नहीं? So around nitrogen you will have only 7 electrons, right? Because it is an odd electron species one. So it is also not obeying the क्या? Octet theory one. Clear है? तो अब समझो यहाँ पर 10 electrons है, right? Since it is greater than 8 electrons, this species is known as the क्या? Hypervalent species. This is known as the hypervalent species. Got it? Hyper means ज़्यादा. So this is known as the hypervalent species. अब देखो, this is fine. Now, coming to the Lewis structures. Lewis structures. You know how to draw the Lewis structure? देखो कैसे बनाते हैं? See here. Suppose you want to make the Lewis structures of CO2 one, right? Clear है? How to make the Lewis structure of the CO2? You know, you have to complete the octet of each element, right? That is the Lewis theory. क्या करना है? हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का क्या करना है तुम्हें? उसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स देना है, राइट? तो कार्बन, द सेंट्रल एटम ऑब्वियसली, एंड यू हैव द ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन. फाइन. Oxygen has 6 valence electrons, whereas carbon has got 4 valence electrons one, right? Then see, carbon has got 4 valence electrons, 1 2 3 and the 4. Clear? Oxygen has got 6 valence electron, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Now electrons are balanced, right? See, you have to draw the electrons in such a way that carbon has got the complete octet
and oxygen will also have the complete octet, right? Now see here, if I draw the structure like this, you will see that carbon has got the complete octet. How many electrons are there? 8 electrons, right? Similarly, if we look at the oxygen, you will see 6 plus 2, how many electrons? 8 electrons. And this how many electrons? 8 electrons. Clear है? How many electrons then? 8 electrons. Clear है आप लोग को? This is how we draw the Lewis structures. Fine? Got it? और एक देखो. Clear है? Can you draw the structure of SO3? Lewis structure of SO3. SO3, huh? Just know about the how many valence electron does sulfur have, how many valence electron does oxygen have. Sulfur has 6, oxygen has 6 valence electron. Then draw the structure. Draw it. The Lewis structure you draw. Now see, can you draw the structure of SO3? See here, देखो कैसे बनेगा, देखो SO3, right? S oxygen and the oxygen. Fine, got it. Sulfur has got 6 valence electron. Fine, sulfur has got 6 valence electron. Isn't it? Oxygen has got 6 valence electron. So oxygen will have 6 valence electron. Got it? Understood? Now see here, oxygen has got the complete octet, 8 electrons, complete octet, 8 electrons and 8 electrons. Clear है? अब देखो यहाँ पर सल्फर कितना कंटेन कर रहा है तुम्हारा? इट इज कंटेनिंग हाउ मच? ग्रेटर देन क्या? 1 2 3 4 5 6 8 12 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्लियर है कि? तो सी हियर, तो हम लोग क्या करेंगे उसको? इट हैज गॉट हाउ मच? सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्या? इट इज नॉट ओबिंग द क्या? ऑक्टेट थ्योरी 1. इट इज नॉट ओबिंग द क्या? ऑक्टेट थ्योरी. तो लुईस उसको कैसे बनाता समझो. लुईस उसको कैसे बना रहा होता? लुईस क्या करता? सल्फर ले लेता. Again that will not possible to make, right? According to, so it is, this structure is also not obeying the kya? Octet theory 1. So sulfur has got the kya? Sulfur is basically hypervalent. Clear है? Sulfur is basically in this case hypervalent. Got it? अब देखो और एक स्ट्रक्चर देखो. Now you see, if I tell you to draw the structure of BeCl2, again ये भी नहीं follow करेगा तुम्हारा. I have to draw the structure of, let it be CH4, right? Now carbon has got how many valence electron? 4. Hydrogen 1, right? Hydrogen has got 1 valence electron.
Then see here, carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen and the hydrogen one, right? Got it? Carbon has got 4 valence electron. Hydrogen has got 1 valence electron. Now, if we look at the structure, see here, carbon has got the kya? Complete octet one. Clear hai? See, hydrogen is having the kya? Duplet, and carbon is having the complete octet. Clear hai? This is how we draw the structure one. Because hydrogen cannot have the octet one, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बना सकता है. Maximum it can have the duplet one. अब देखो next topic, you see the formal charge. See the formal charge की बात करते हैं. Formal charge. How to find the formal charge? The formula for the formal charge is equals to number of valence electrons minus number of lone pairs minus half of number of shared electron pairs, minus half of number of shared electron pair. Now see here, how many number of valence electrons does carbon has? 4 1, right? Clear? So I am formal charge on carbon पे देखो 4. How many lone pair does carbon have? No lone pair, सब तो bond है. How many number of shared electron pair? 1 2 3 4 5 6 and 7 8. तो minus half into 8, that is how much? 4 minus 4 is equals to क्या? 0 1, right? So in this case, carbon has a formal charge of 0. If you find for the hydrogen, hydrogen will also have the formal charge 0. Got it? This is how we found kya? The formal charge using the Lewis structure. Using the Lewis structure. Got it? Fine. अब देखो. Now the next one you see. Now see the next one. देखो, NF3, ठीक है. Can you find out the formal charge on nitrogen and the fluorine? Can you find out the formal charge on nitrogen and the fluorine? देखो कैसे बनाएंगे. नाइट्रोजन का एक लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, and you have the fluorine one, right? So see here, formal charge on nitrogen is equals to, how many valence electron does nitrogen have? 5, right? Clear? कितने लोन पेयर हो गए तुम्हारे? एक. माइनस हाफ इंटू शेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया तुम्हारा? 1 2 3 4, कितने हो गए तुम्हारे? दिस वन, राइट? 6 1, राइट? क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 5 लोन पेयर तुम्हारा क्या हो गया? 1 हो गया तुम्हारा. क्लियर है? So it will be क्या? 5 minus 1 minus क्या? 3 1, right? Clear? यही आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? Any problem? So what is the formula? Formula is the total number of non-bonding or electrons for the lone pair, right? Wait, lone pair तो कितने हो गए तुम्हारे? Total number of
No, number of lone pair of electrons you write. Number of lone pair of electrons. Total number of lone electrons you write. ठीक है, नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा. सो यू विल हैव 5 minus 2 minus half into 6. 5 minus 2 minus 3 which is equals to how much? 0. क्लियर है. तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा 0 आ जाएगा. सिमिलरली इफ यू टेक फॉर्मल चार्ज ऑन फ्लोरीन, तो देखो कितने लोन पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6. इट विल बी 7 है कि नहीं. क्या आ जाएगा तुम्हारा 6 minus half into 2 which is equals to how much? 0. So the formal charge on nitrogen as well as the fluorine will be 0. क्लियर आप लोग को, ये समझ में आ गया. अब देखिए यहाँ पर राइट डाउन. Anyone you knew about the ionic bond? What is ionic bond? What is ionic bond? बोलो. What is ionic bond? बताओ. Yeah, anyone? What is ionic bond? Ionic bond is basically between the cation and the anion होता है ना. There is electrostatic force of attraction. So see here, ionic bond, ionic bond, ionic bond की बात करते हैं. क्लियर है. तो देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा. सी हियर आयनिक बॉन्ड, दिस इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो देखो यहाँ पर सी हियर इन दिस केस यू हैव सोडियम. गॉट इट. तो सोडियम विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड द क्लोरीन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन. राइट. तो क्या होगा तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा to form Na plus and the Cl minus, to form the क्या Na plus and the Cl minus 1. So in the favorable conditions of ionic bond is that metals must have low ionization energy. मतलब कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, favorable conditions क्या क्या होने चाहिए. Favorable conditions, first one, metals must have low ionization energy and non-metals must have high electron negativity and electron affinity. थर्ड क्या होगा, high lattice energy, high lattice energy. So these are the favorable conditions of the क्या ionic bond. High lattice energy means greater the electrostatic force of attraction, better is the bond. जितना high charge होगा उतना अच्छा क्या होगा तुम्हारा ionic bond बन रहा होगा. रेडियस जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा क्या बनेगा तुम्हारा ionic bond बन रहा होगा. क्लियर है आप लोग को. अब देखिए यहाँ पर high electronegativity और you can say electron affinity. High electronegativity or electron affinity and electron affinity. And high electron affinity. Clear? Fine one. Now the properties of the ionic bond, right? See here. Properties of the ionic bond. लिख लिए. Now tell me few properties of the ionic bond. Obviously this will be क्या very high. जैसे कि you will see the NaCl, right? तो NaCl तुम्हारा क्या आएगा, solid form में होता है. Clear है. Does NaCl will conduct electricity? नमक पे वायर लगा तो करंट करेगा क्या, नहीं करेगा. That will conduct electricity in the molten form or in the aqueous form. Solid NaCl will not conduct electricity, but in the molten form and the aqueous form that will conduct electricity. Also
Ionic compounds have very high melting point and the boiling point. Clear? ये तो पढ़ा होगा ना, NaCl का boiling point melting point तुम्हारा क्या होगा, बहुत ही high हो रहा होगा. तो you see properties of ionic compound, properties of ionic compound, properties of ionic compound. देखो पहला high melting point and the boiling point. Clear? Conduct electricity in molten form or in aqueous form. In molten form or in aqueous form क्लियर? ये समझ में आ गया. और देखो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, राइट? You see NaCl is soluble in water or not? Because that is highly polar in nature. Water is also polar, NaCl is also polar. So like dissolves like one. Clear? It means they are soluble in polar solvents. Soluble in polar solvents like water. Soluble in polar solvents like water. Clear? ये समझ में आ गया. Fourth, NaCl is the crystals form, right? So generally the ionic compounds are in the crystalline form. Clear? Got it? So these are the some properties of the ionic compounds. समझ में आ गया? Now अब देखो, now see the Fajans rule, right? Now see the Fajans rule. What do you mean by the Fajans rule? Fajans rule. देखो, see, no bond is perfectly covalent, no bond is perfectly ionic. ये पढ़ चुके हो, NCERT का लाइन ही है ये. No bond is 100% covalent, no bond is 100% ionic one. See, we just discussed about the ionic bonds. It means that it will have some characteristics of covalent character also. That's why we will be discussing about the Fajans rule. तो देखो क्या होता है. Suppose the bond is perfectly ionic one. Let's take the example of the Na plus and the Cl minus. Generally cation तुम्हारा क्या होगा, छोटा होगा. Clear? And generally anion is in the bigger inside. I am not saying always, generally. So see here, this is the क्या bigger in size one. This is the negative charge. Got it? One is your cation and one is your anion one. So see here, if this is 100% ionic, then Na plus will be spherical one and the Cl minus will be spherical one. But this is not the case, right? Bond has some covalent character. Covalent character means the sharing of electrons, right? Means the electron will be shared also. तो अब देखो, ये था आइडियल 100% आयोनिक. अब क्या होगा, बॉन्ड तो 100% आइडियल हो नहीं सकता, तो क्या होगा, सी दिस कैटायन, राइट? क्लियर है? इट विल स्टार्ट टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ क्या, दिस एनायन वन. क्लियर है? कैटायन क्या करेगा, एनायन का शेप को क्या करना करेगा, डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा. बिकॉज cation has the positive charge, so it will attract the electron density towards it. Once it starts electron density towards, you see the deformity, right?
deformation occurs or not? It appears like a covalent bond one. क्लियर है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो सी यार थोड़ा बहुत वो क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत शेयरिंग करना स्टार्ट हो जाएगा. इट मीन्स दैट आयनिक बॉन्ड विल हैव सम परसेंटेज ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो. नाउ कैसे पता चलेगा यहाँ पर, यू सी द शेप, राइट, शेप इज गेटिंग डिफॉर्म्ड वन. अब कैटायन जितना छोटा होगा, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द कैटायन, राइट, कैटायन का साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, तो वो क्या करेगा, इट विल इजिली डिफॉर्म द anion one, right? Got it? So you see here, in order to have the polarizing power of cation, directly proportional to the क्या, greater the charge of the cation, greater the charge divided by, जितना छोटा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, साइज वन. सो यू कैन सी हियर साइज मीन्स क्या, वॉल्यूम वन. गॉट इट? यू कैन से चार्ज वॉल्यूम बेसिकली मीन्स द क्या, चार्ज डेंसिटी. हायर द चार्ज डेंसिटी, हायर विल बी द पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन. वी स्टडी पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन ओनली. क्लियर है? सो यू कैन से this is basically your क्या, charge density. This is basically your charge density. Got it? Now coming to the anion, greater the size of the anion, more it will be deformed, right? यहाँ पर deformation cation का नहीं, deformation anion का हो रहा है. Clear है? And what is the purpose of the cation? To deform it. Clear है? तो सी anion विल गेट डिफॉर्म्ड एंड कैटायन विल क्या करेगा, उसको डिफॉर्म करेगा. एक होगा और एक करेगा. गॉट इट? देन सी हियर, इफ द anion इज वेरी लार्ज वन, राइट, इट विल इजिली गेट डिफॉर्म्ड. सो यू कैन सी द polarizability. We define polarizing power for the cation and polarizability for the anion one. So the polarizability of the anion डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का क्या, एक तो साइज जितना बड़ा, क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, चार्ज वन. जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी होगी. गॉट इट? नाउ यू सी, इफ आई एम कंपेयरिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द polarizing power of the cation and the polarizability of anion. Got it? तो see here, तो देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको, ये क्या कर रहा है, ये समझ में आ रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ शेप इज गेटिंग डिफॉर्म वन. तो नाउ सी हियर, in order to have the covalent character, तो I can say कोवेलेंट कैरेक्टर कब हाई होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस इफ कैटायन क्या होना चाहिए, कैटायन और एनायन की बात कर रहे हैं. कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए. एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, एंड यू हैव ऑल्सो द हाई चार्ज वन. And the last one is that it must have the pseudo noble gas configuration. Pseudo noble gas configuration. मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन. That will basically your क्या, covalent character. Got it? Understood? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ कमिंग टू द कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज फाइन, राइट? गॉट इट? एक क्वेश्चन से मैं समझा रहा हूं, देखो, सी देखो, you have NaCl and you have AlCl3, right?
clear, which will have the more covalent character. See why AlCl3, देखो यहाँ पर, see here, chlorine is the common one, right? So you have to look for the cation one. Now the charge on the cation, here it is +1, here it is क्या, +3. Greater the charge on the cation, more is the क्या, polarizing power, more is the covalent character. So this will have the more covalent character. Covalent character. और एक देखो, if we look NaCl and the KCl, clear, which will have the more covalent character. NaCl, see, the charge here, it is plus, minus, plus and the -1, right? So here sodium plus hai. Obviously you see the sodium plus has a lower size, right? Clear hai? जितना साइज छोटा उतना ज़्यादा polarizing power, उतना ज़्यादा covalent character. So you see this NaCl will have the more covalent character. This NaCl will have the more covalent character. Got it? Understood? Any problem? Now coming to the covalent bond. Now coming to the covalent bond one. देखो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं. सी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्लियर? यहाँ पर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. शेयरिंग ऑफ, हियर यू हैव द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Got it? Whenever there is sharing of electrons, you will have the क्या? Covalent bond. You will have the क्या? Covalent bond. For example, see here, if you take the H and the Cl one, right? See, both are almost the non-metals, right? The electronegativity difference is not that much high. However, in the ionic compounds, the electronic difference is very, very high one. For example, the sodium and the chlorine. Now it will share the electron pairs, तो क्या होगा? तुम्हारा covalent bond बन जाएगा. क्या कर रहा है? Share कर रहा है कि नहीं कर रहा है? So this is basically your क्या? Shared electron one. So covalent bond forms by the shared electron one. Now coming to the, एक देखो coordinate bond की भी बात कर लेता हूँ मैं. What is the coordinate bond? See here, in the coordinate bond, you see, suppose NH3 is there, H plus है, तो ये क्या करेगा तुम्हारा? अटैक करेगा to form the क्या? This is known as the क्या? Coordinate bond. This can be written as क्या? NH4 plus. Clear? अब बात करते हैं what are the properties of the covalent bonds. What are the properties of the covalent bond? बताना. What are the properties of the covalent bond? It will have low melting point, low boiling point. Clear है कि? Write down low melting point, low boiling point. और क्या क्या होगा? Soluble in क्या? Non-polar solvents. Clear है? Soluble in non-polar solvent. See here. Properties of covalent bond देखो. Properties of covalent bond. Properties of covalent bonds. See, it will have the low boiling point and the melting point, right? Soluble in non-polar solvents. Usually, not always. Bond is directional in nature.
bond is directional in nature. Right down. Bond is directional in nature. क्लियर है आप लोग का? अब देखिए, सी अगेन द कोवलेंट बॉन्ड भी नॉट 100% कोवलेंट वन, राइट? इट विल हैव द सम ionic character. So you can say here that greater the electronegative difference, greater the electronegative difference, then percentage ionic character increases, then the percentage ionic character increases. क्लियर है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यू सी HCl में तुम्हारा क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल हैव स्लाइट आयोनिक character also. Although it is a covalent bond, it will have slight ionic character. It will have the slight ionic character. Clear है? Fine. अब देखो, see here. Now see the dipole moment, right? Dipole moment. Dipole moment. What is dipole moment? It is the separation of the charges one, right? So see here, dipole denoted by mu1, which is equals to q into the distance one. It means, suppose you have the pole delta positive and the delta negative, delta positive and the delta negative. तो ये क्या डिनोट कर रखा है तुम्हारा, चार्ज इज डेल्टा पॉजिटिव, राइट? सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय चार्ज विद द डिस्टेंस, दैट विल गिव यू द क्या, डाइपोल मोमेंट. सी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? इट इज अ बेसिकली योर वेक्टर क्वांटिटी वन. दिस इज बेसिकली योर वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज बेसिकली योर वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर. It is basically your vector quantity. Now you know how to solve the vector quantity, right? All of you know, है ना? So now you tell me. So if mu net not equals to 0, that means the compound is non-polar compound. Non-polar compounds. If mu net is equals to 0, that is the polar compound. That will basically और क्या, polar compounds. Now see here, how to find whether this compound is polar or non-polar. और एक चीज देखते जाओ, यूनिट्स देखते जाओ. इसका यूनिट ऑफ, पहले लिख लो उसको, फिर लिखाता हूँ. अब देखिए, दिस इज फाइन. नाउ सी हियर, सी म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, राइट? तो क्यू का चार्ज तुम्हारा क्या आएगा, कूलम में आ सकता है ना? एंड डी विल बी इन द क्या, मीटर वन, राइट? सो यू हैव टू यूनिट्स, वन इज योर SI यूनिट एंड वन इज योर CGS यूनिट, सेंटीग्राम सेकेंड वन, राइट? तो देखो यहाँ पर, तो 1 डिवाइस इक्वल्स टू 10 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर. It is the CGS unit. It is your basically your CGS unit, this one, or equal to 3.3 × 10⁻30 coulomb meter. Write down. It is the SI unit. This one is basically your क्या, SI unit one. Write it down.
अब परसेंटेज इंडिकेटर हम लोग कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू थ्योरेटिकल into 100. अब देखो now see, this is fine, right? Now coming to the polarity and the non-polar compound. देखो, see, this is CO2, right? है ना? Whether this compound is polar or non-polar? Polar. देखो फिर, dipole moment will be towards the more electronegative element. Oxygen is more electronegative, right? इधर क्या होगा? इसके तरफ होगा, right? So see, both have the equal dipole moment in the opposite direction, right? It means they will be क्या? Cancelled out. So in this case, this mu net is equals to क्या? 0. That means this compound is non-polar. This basically और क्या? Non-polar. Clear? Similarly, you see about the water. अब देखो क्या होगा, डायरेक्शन देखो. This will be like this, this will be like this. So the mu resultant will be क्या? Mu in this direction, right? Got it? Vector sum. So you can say mu net is equals not equals to 0. Therefore this is क्या? Water is a polar one. So water is basically your polar compound. Got it? वेक्टर सम कर रहा हूँ. वेक्टर तो आता होगा ना? यू नो द वेक्टर, राइट? ऑल ऑफ यू नहीं आता? गाइस डोंट नो वेक्टर? कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं. वीवीटी, यू सी वीवीटी की बात करते हैं. देन यू हैव मॉलिक्यूलर वेक्टर, देन विल बी कंप्लीट. अब देखो, you see the VVT1. This is the valence bond theory. This is the valence bond theory. Valence bond theory की बात करते हैं. VVT1. See, the bonds are getting formed when the orbitals overlap, right? जैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? बॉन्ड विल गेट फॉर्म. गॉट इट? तो सी हियर, इन दिस केस आई हैव टू टेक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस टू बी z एक्सिस. गॉट इट? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस टू बी z एक्सिस. तो सी व्हाट हैपेंस हियर, दैट देखो यहां पर एक होता है सिग्मा ओवरलैप एंड वन इज द पाई ओवरलैप. इन सिग्मा यू हैव द हेड ऑन ओवरलैप. हियर यू हैव साइडवेज ओवरलैप. हियर यू हैव द साइडवेज ओवरलैप. फॉर एग्जाम्पल, सी हियर PZ and the PZ. आपस में ओवरलैप करेंगे तो कैसे ओवरलैप करेंगे? इट विल बी लाइक दिस वन, राइट? सी, सो दिस इज द हेड ऑन ओवरलैप. सो दिस इज नोन एज द क्या? सिग्मा बॉन्ड. सो दिस इज द क्या? सिग्मा बॉन्ड. Now coming to the sideways overlap. Sideways overlap means, suppose this is the PZ and the PZ1. Suppose you have PX and the PX.
तो सी हियर, दिस इज सपोज px and the px. This is known as the क्या, parallel overlap और यूनियनस साइडवेज ओवरलैप. ये क्या बनाता है तुम्हारा, पाई बॉन्ड बना देगा. क्लियर है. तो साइडवेज से तुम्हारा पाई बनेगा और हेड ऑन से तुम्हारा क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा. क्लियर है. फाइन. नाउ कमिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन वन. देखो यहां पर, कमिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन. सी हियर, coming to the hybridization. समझो, hybridization. See, hybridization means the intermixing of the atomic orbitals. It is basically the intermixing of atomic orbitals. Intermixing of atomic orbitals having almost same energy, to give hybrid orbitals having different orientation in the space, different orientations in the space. तो देखो क्या होता है, पहला समझो. कमिंग टू द sp3 हाइब्रिडेशन, यू सी sp में क्या होता है, देखो, यू हैव द s ऑर्बिटल एंड यू हैव द p ऑर्बिटल, राइट. बोथ विल इंटरमिक्स टू फॉर्म द क्या, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. मतलब कि जितना मिक्स किए उतना ही क्या बनेगा तुम्हारा, ऑर्बिटल बना होगा. सी हियर, 1s and 1p orbital has been mixed, right, to give equal number of orbitals, one orbital and the one orbital. Clear? So this is known as the क्या, hybridization की बात. This is known as basically your hybridization. Now see here, अब देखो, now coming into VCPR theory, right, VSEPR theory. This is known as the valence cell electron pair repulsion theory. It means that the most stable structure will that one which have the least repulsion one, right. The structure which has got the least repulsion, that will be the structure. देखो यहाँ पर, in this case lone pair is repulsion is greater than lone pair, bond pair greater than the bond pair and the bond pair. जैसे कि देखो, for example you see, यदि मैं BCl2 के स्ट्रक्चर की बात करूँ, राइट, if someone draw the structure like the BCl like this one, this is very inappropriate, right. In order to give the minimum repulsion, they must be 180 degree to each other. So that is the theory. You have to minimize the repulsion in order to get the क्या, structure. Got it? So that is the basically your theory one. Clear? Just minimize the repulsion to get the structure. तो देखो यहाँ पर, see here, हम लोग बात करते हैं lone pair number of total count, number of lone pair, number of bond pair, hybridization,
hybridization, you have the geometry, you have the shape and the examples. तो देखो यहाँ, let the total count be 1, number of lone pair is 0 and the bond pair is 2 1. क्लियर है? 2 है मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा SP. क्लियर है? ज्योमेट्री विल बी व्हाट? लीनियर वन. शेप भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? लीनियर. फॉर एग्जाम्पल यू हैव व्हाट? BeCl2. क्लियर है? तुम्हारा शेप क्या बन जाएगा? BeCl2. नाउ द टोटल काउंट यू से 3. ठीक है. नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 3. हाइब्रिडेशन विल बी क्या? sp2. ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर वन. It will be a trigonal planar. Shape will be trigonal planar. Example देखो, BF3. Clear? Example will be और क्या? BF3. Fine. Now see here, second example you see. देखो यहाँ पर second example. 4 1. Number of lone pair is 0. Number of bond pair will be, let it be 4 1. हाइब्रिडेशन तुम्हारा क्या आ जाएगा? sp3. इसका शेप कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल. This will be also tetrahedral. The shape, for example, CCl4. CCl, Cl. You have the Cl, right? And you have the Cl. Got it? This is basically और क्या? Tetrahedral. Now see here, lone pair 1, bond pair 3. हाइब्रिडेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा. ये हो जाएगा तुम्हारा ट्राइगोनल पिरामिडल. फॉर एग्जाम्पल यू सी द अमोनिया वन, राइट? This is क्या? Trigonal pyramidal. Now you last you see lone pair 2, bond pair 2, hybridization still will be sp3. Tetrahedral, it will be the bent one. For example, you have the water. Got it? So the water will have this structure one. Clear है आप लोग को? और देखो, write down. How to find the total number of electron count? Total electron count will be क्या? Number of bond pair plus number of lone pairs. Fine. वाटर बेंट. हाँ, बेंट है ना वाटर, ऐसे. दिस इज लाइक बेंट. और देखो, सी हियर, नाउ कमिंग टू द डन. अब देखो, अगेन यू सी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप and the examples.
से समझो 5 सॉरी बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 0 हाइब्रिडेशन विल बी क्या sp3d ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल for example shape will be by TBP examples you see PCL5 trigonal bipyramidal geometry got it write it down trigonal bipyramidal geometry लिखो इसको और देखो bond pair is 4 lone pair is 1 again the hybridization will be same geometry will be seesaw for example S F F seesaw this is how we find out the क्या hybridization बने last देख लो 6 है 60 sp3d2 octahedral shape will be octahedral for example sf6 this is structure of the sf6 will be there fine अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यू सी द MOT1 राइट MOT की बात करते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नाउ कमिंग टू द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यू सी द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी देखो यहाँ पर सी MOT क्या होता है समझना एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे कि समझो कोई वेव फंक्शन है साई ए got it let be the psi b is there clear तो क्या होगा यहाँ पर so this is basically और क्या psi a plus psi b1 so this is known as a constructive interference so when there is a constructive interference क्लियर फिर तुम्हारा क्या होता है यू हैव साई ए माइनस साई b1 so the amplitude will decrease this is known as the क्या destructive interference this is known as the destructive interference write down this is known as the destructive interference लिखो इसको कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर बाकी कल हम लोग करेंगे इसको है ना स्टार्ट करते हैं सी previous KCET open the previous KCET question number 1 previous KCET question number 1 previous KCET question number 1 state which of the following involve change in hybridization both hybridization and the shape one बताओ क्या होगा which option थर्ड ऑप्शन यू सी देखो समझो देखो यहां पर you see first one BF3 is going to BF4 minus right you see the total electron count BF3 has 3 bond pair right and BF4 minus has 4 bond pair so the hybridization will be क्या sp2 इसका क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा right so the structure will be look like this one F
F and the F, this will be this is basically your क्या trigonal planar and this is basically your क्या tetrahedral one. Clear? This one is trigonal planar, this one is basically your tetrahedral one. Clear? So see, the habitation also changes and the shape also changes here. So which option? The third option, right? और देखो क्वेश्चन नंबर 5 you see. क्वेश्चन नंबर 5. देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, राइट, है ना, फॉर द फॉलोइंग. तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. You see, in this case you have C2H4, right? C2H4 will be C double bond C, hydrogen hydrogen, and C2H6 will be what? This one. You have C6H6, that is the benzene one. और एक तुम्हारा क्या आ गया? C2H6. This is क्लियर है. देखो यहाँ पर see here. If you look at the bond order, right, the bond order is equals to how much? 2. Between carbon and carbon, how many double bonds are? Two bonds are there, right? So bond order will be 2 1. Here bond order will be how much? 3. यहाँ पर bond order होता है 1.5. Here bond order will be how much? 1. Got it? Now you know that bond order increases, so bond length decreases. Got it? Bond order increases, so bond length decreases. So which is the option then? थर्ड ऑप्शन, राइट. थर्ड ऑप्शन है क्या? देखो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा तुम्हारा? डी का हो जाएगा, फिर ए का हो जाएगा, नहीं डी के बाद किसका हो जाएगा? सी का ना, फिर ए का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा. सो दैट इज द ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Which one? See here, coordinate bond, right? है ना, तो देखो यहाँ पर you see the coordinate bond. क्या आएगा? You have NaNC, right? Isn't it? So the structure will be Na plus Nc minus. इसका कैसा बनता है? N. तो see you have the coordinate bond, ionic bond as well as the क्या? Covalent bond. Got it? Fourth you marked. Question number 10. Question number 10. Octahedral. sp3d2, right? Or d2sp3, that is the क्या? Octahedral one. Got it? और देखो क्वेश्चन नंबर 14. आइडेंटिकल शेप्स. बोलो, चल एनीवन. बताओ विच ऑप्शन? ऑप्शन 3. वाई? XeF2 कैसा बनेगा? लीनियर. जिंक क्लोराइड इज ऑल्सो क्या? इट इज अ लीनियर वन, राइट. BeCl2 तो इधर हो गया तुम्हारा, ये CH4 हो गया तुम्हारा, शीशा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, वो तो नहीं होगा. क्लियर है ना? सो दे हैव गिवन द 14 एज अ थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन कैसे दे दिया? देखो
chemical bonding, right? 14 na, 14 they have given as the third option. First option का सीसा हो गया. हाँ ठीक है. Now question number 16. Question number 16. HCl gas is covalent, that is true, right? And NaCl is an ionic. This is because, बताओ, electron difference between hydrogen and chlorine is less than 2.1. क्या होगा बताओ? Sodium is highly electropositive. Fine. Hydrogen is a non-metal. वो दोनों कैटेगरी में आ सकता है. HCl is a क्या? गैस, वो सो कोई मतलब नहीं है. Electron difference between H and Cl is very very less than 2.1, है ना? तो देखो इसका आंसर क्या दे रखा होगा? 16th का ना 4. हाँ ठीक है. Question number 17. Main axis of diatomic molecule is Z. The orbitals px and py orbital to form. px and py क्या करेंगे? बताओ. See, px ऐसा है तो py ऐसा है. No symmetry, right? It must have symmetry to form the bonds, right? If px is this much, py is there. कुछ cross बन जाएगा. और cross never forms any bond one. So which option then? No bond. ठीक है. और देखो. Which of the following structure of a molecule is expected of 3 bond pairs and 1 lone pair? 3 bond pair and 1 lone pair. 3 bond pair and 1 lone pair. Tetrahedral, right? 3 bond pair and 1 lone pair. 3 plus 1 4 मतलब sp3, that is tetrahedral one. Fine. Now question number 22. 19th one. Pyramidal. क्या दे रखा है? 3 bond pair, right? And 1 lone pair. 3 plus 1 कितना होगा? 4 होगा ना. Pyramidal में क्या होगा? 5, right? Got it? Now coming to the question 22. CO2 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? It is given as trigonal pyramidal. See, which of the following structures of a molecule is expected to have 3 bond pairs and the 1 lone pair of electrons, right? देखो यहाँ पर. C1. This is nitrogen, right? है ना? एक लोन पेयर है तुम्हारा. सी शेप तुम्हारा क्या आएगा? तुम्हारा शेप विल बी क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट? है ना? ट्राइगोनल पिरामिडल. इट विल बी क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल. फाइन. द ज्योमेट्री विल बी क्या? ज्योमेट्री विल बी क्या? टेट्राहेड्रल वन, राइट? ज्योमेट्री विल बी और टेट्राहेड्रल वन. फाइन. तो सी व्हाट आर दे आर आस्किंग, बाय द वे दे आर आस्किंग विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, राइट? तो देखो यहाँ पर, हाँ, शेप पूछे या फिर स्ट्रक्चर पूछे. क्लियर है? दैट डिपेंड्स ना. यदि ज्योमेट्री पूछ रहा हो तो तुम्हारा आंसर क्या होता है? तुम्हारा टेट्राहेड्रल हो रहा है. जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा रखा होगा, देखो C1 टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री, बट द शेप कैन चेंजेस, राइट? क्लियर है कि? सो शेप और यहाँ लिख लो स्ट्रक्चर. गॉट इट? आगे देखते. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 22 बताओ. CO2, CH4 and the CO3 2 minus. CO2 has a hybridization sp2 कि sp? sp1. यू सी हाइब्रिडेशन कैसे चेक करते हैं तुम्हें पता होना चाहिए. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. CO2 का देखो, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गए? 2 हो गए. लोन पेयर 0 मतलब 2 हो गया, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp. नाउ कमिंग टू द CH4, ऑब्वियसली
sp3 CH4 sp3 CO32 minus sp2, तो क्या आ गया sp sp3 and sp2, which option? 23rd बताओ, बोलो। बोलो 23rd you tell. SO2 BF3 तो नहीं होगा, CO2 नहीं होगा, BCl2 बचा क्या SO2. Why SO2 see here? देखो दिस इज द स्ट्रक्चर राइट SO2 का, तो इधर खींचा तो रिजल्ट डायपोल मोमेंट किधर आ गया, इधर आ गया. क्लियर है? बिकॉज दैट शेप इज नॉट लीनियर वन, दैट इज बेसिकली द बेंट वन, तो इसलिए क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट विल लुक लाइक दिस वन. नाउ 25 you see formal charge on the ozone one. This is the structure of the ozone. Now can you tell me the formal charge on central oxygen one? What is the formal charge on the central oxygen? See, this can be drawn like this also, right? O plus O minus and double bond O. देख रहे हो ना, O पे क्या आ रहा है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, तो सेंट्रल एटम विल हैव द प्लस, साइड वाला क्या होगा जीरो, एक का क्या आएगा तुम्हारा जीरो आ जाएगा, दिस विल -1 एंड दिस विल बी द, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर नीट में भी बहुत बार पूछते हैं उसको. नाउ सी हियर, परसेंटेज एस कैरेक्टर दे आर आस्किंग, राइट? तो देखो यहां पर सी हियर SP has a percentage S character of how much? 50-50, दोनों इक्वल है तो 50 and this is also 51, right? sp2 में परसेंटेज S कितना आएगा, 1/3, right? That will be 33.3. Fine. sp3 में कितना आ जाएगा S1? sp3 percentage S character 1/4, right? That will be 25%. This will be how much? 75%. Fine. Clear है? This is how we find out the percentage S character one. Now they are asking the percentage S character, right? NO2 plus, what is aberration of NO2 plus? What is aberration of NO2 plus? NO2 plus का aberration sp होगा, right? See, the aberration of NO2 plus will be sp1. NO3 minus का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, sp sp2 NH4 plus tetrahedron sp3. So what is the percentage S character then? 50, 33.3, then 25. Got it? Understood? और देखो, now you see previous NEET PYQs. Previous NEET PYQs. तो देखो यहाँ पर अच्छा फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया. क्वेश्चन नंबर 16 यू सी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? Which of the following species contain 3 bond pairs and 1 lone pair? 3 bond pairs and 1 lone pair. Which one? Question number NEET PYQs question number 16. Tell. PCl3 you see, right? देखो, if you see the structure of the PCl3, it will be like this one, right? P chlorine, chlorine, chlorine and the lone pair, isn't it? है ना? P chlorine, chlorine and the lone pair is there.
Then see here, this has got the 3 bond pairs and 1 lone pair. Clear? So which option? PCl3, right? Question number 18. 18 बताइए क्या होगा? Which the following is a polar molecule. See, if you look at the structure of SF4, SF4 कैसा है? ये क्या आ जाएगा? देख रहे हो ना, ऊपर वाला तो कैंसल हो जाएगा, बट इधर वाला कैंसल नहीं हो पाएगा. So this SF4 will be और क्या? Polar compound. But if you look at the rest structure, that will be क्या? Cancel out. जैसे कि देखो, SiO4 क्या है? Tetrahedral है, right? So this will be cancel out. Cancel out हो जाएगा. Again you have HCF4. This will be look like this one. This will be cancel out. BF3 obviously this will be cancel out. F, F and the F. So all in these rest cases you have the dipole moment is equals to क्या? 0, 1. Fine. Question number 29. Question number 29. How many pi bonds are there? Sorry, electrons पूछ रहा है क्या? Electrons पूछ रहा है. First count how many pi bonds are there? In 29, 1, 2, 3, 4. 4 pi bonds are there, right? So 4 into 2, 8 electrons. Fine. Now 34. बताओ 34 यूनिट है क्या होगा? 34 बताओ 34. लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर. कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन. फाइन. Tomorrow I will be discussing this MOT part. Okay.